श्रीमन्नारायणीयं दशकं 90। वृकभृगु मुनिमोहिनी अम्बरीषादिवृत्तेषु अयि तव हि महत्त्वं सर्वशर्वादिजैत्रं स्थितमिह परमात्मन् निष्कलार्वागपिन्नं किमपि तदवभातं तद्दिरूपं तवैव। मूर्तित्रयेश्वर सदाशिव पञ्चकं यत् प्राहुस्परात्मवपुरेव सदा शिवोऽस्मिन् तत्रेश्वरस्तु स विकुण्डपदस्त्वमेव त्रित्वं पुनर्भजसि सत्यपदे त्रिभागे। तत्रापि सात्विकतनुं तव विष्णुमाहुः दाता तु सत्त्वविरलो रजसैव पूर्णः सत्त्वोत्कट त्वमपि चास्ति तमो विकार चेष्टादिकञ्च तव शङ्कर नाम्निमूर्तौ तञ्च त्रिमूर्त्यति कथं परपूरुषं त्वां सर्वात्मनापि खलु सर्वमयत्वहेतोः शंसन्त्युपासनविधौ तदपि स्वतस्तो त्वद्रूपमित्यतिदृढं बहुनः प्रमाणम्। श्रीशङ्करोऽपि भगवान् सकलेषु तावत् त्वामेव मानयति यो न हि पक्षपाती त्वन्निष्टमेव स हि नाम सहस्रकादी व्याख्यद्भवत्स्तुतिपरश्च गतिं गतोऽन्ते। मूर्तित्रयादिगमुवाच च मन्त्रशास्त्रः यादौ कलाय सुषमं सकलेश्वरं त्वां ध्यानं च निष्कलमसौ प्रणवे खलुक्त्वा त्वामेव तत्र सकलं निजघाद नान्यम्। समस्तसारे च पुराणसङ्ग्रहे विसंशयं त्वन्महिमैव वर्ण्यते त्रिमूर्तियुक् सत्यपद त्रिपागद परं पदं ते कथितं न शूलिनः यद्ब्राह्मकल्पमिह भागवत द्वितीय स्कन्दोदितं वपुरणावृतमीशधात्रे तस्यैव नाम हरिशर्वमुखं जगाद श्रीमाधवः शिवपरोऽपि पुराणसारे। ये स्वप्रकृत्यनुगुणा गिरिशं भजन्ते तेषां फलं हि दृढयैव तदीयभक्त्या व्यासो हि तेन कृतवान् अधिकारिहेतोः स्कान्धादिकेषु तव हानि वचोर्तवादैः। भूतार्थकीर्तिरनुवादविरुद्धवादौ त्रेधार्थवादगतयः खलु रोचनार्ताः स्कान्धादिकेषु बहवोऽत्र विरुद्धवादाः त्वत्तामसत्त्वपरिभूत्युपशिक्षणाद्या यत्किञ्चिदप्यविदुषापि विभोमयोक्तं तन्मन्त्रशास्त्रवचनाद् यपि दृष्टमेव व्यासोक्तिसारमय भागवतोपगीत क्लेशान् विदूय कुरु भक्ति भरं परात्मन्। श्रीहरये नमः। श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं। श्री चोटानिक्करे भगवति अम्मये शरणं। आनंद चिन्मयने शरणं। नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।